than normal, or if INR is more than 3, PT-INR is more than 3. That you monitor these at least every 21 days, 1 month. If it is more than 3, you can reduce the dose. Thereby, we can prevent the risk of bleeding into many patients. They have been also given a drug that can cause them to bleed, like for example, aspirin अगर उसको additional दे दिया, और कोई दूसरा NSAID दे दिया, antiprostaglandin. So these patients are on a very high risk. अगर वो patient को bleed होता है, तो resuscitate the patient. If the patient has gone into shock-like state because of bleeding, treat the bleeding locally if possible. लोकल प्रेशर देखिए हम लोग, अगर हम लोग अगर इसको वुंड का ब्लीडिंग हो रहा है, कैनुला साइट का ब्लीडिंग है, अरेंज एन एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन, अगर जीआई ब्लीडिंग है, पेप्टिक अल्सर है, तो लोकल कॉज को ट्रीट करो एज फार एज पॉसिबल. क्योंकि अगर रिवर्स करे एंटीकोएगुलेशन को, तो जिसके लिए एंटीकोएगुलेशन करे वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. सो दिस रिक्वायर्स एन वेरी टेलर मेड ट्रीटमेंट. एक कम करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा, लेकिन इंडिकेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, मेन पैथोलॉजी बढ़ जाएगा. और इफ द ब्लीडिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इफ यू थिंक दैट द रिस्क ऑफ स्टॉपेज ऑफ एंटीकोएगुलेशन is not immediate, then the risk of bleeding, see every word is important in this. क्या मैं बोला? Risk of stoppage of anticoagulation is not urgent than the risk of bleeding. Anticoagulation. क्या कर सकते हैं? Assess the patient which is greater danger. The same sentence, मैं जो बोला वही sentence है. Greater danger क्या है? What exactly is the greater? Risk of continuing anticoagulation is a greater danger, or risk of stoppage of anticoagulation is greater danger? It would be inappropriate to reverse the anticoagulation fully in a patient with severe pulmonary embolism. देखो, तो हम ऐसे ब्लीडिंग से अगर नहीं मरेगा तो, sorry the words I am using, but pulmonary embolism से चला जाएगा. So that is the reason we need to assess the risk. We need to take the relatives in confidence. नहीं तो रिलेटिव बोलेगा तुमने ड्रग बंद कर दिया और पेशेंट खराब हो गया. So you can explain all the pros and cons of continuing it and stoppage of it. The relatives take their consent in writing if you want to prevent your hospital from getting attacked. Otherwise, going to create problems. These are the very complicated patients. So reversal treatment क्या रहता है? Unfractionated heparin के लिए Protamine sulfate दे दो 1 milligram, reverses the effect of 100 units of heparin. Protamine sulfate, if you remember, pharmacology में हम लोग discuss किए थे. Protamine sulfate comes up as a chemical, sperm of a fish. So हम लोग extract करते हैं. Maximum dose of Protamine is 50 milligram. LMW, Protamine is less effective for those. However, the dose is usually the same. Warfarin, अगर पेशेंट को ले रहे हैं तो वार्फरिन से विटामिन के एनालॉग, सो वार्फरिन का एक्शन रिवर्स करने के लिए विटामिन के दे दो. फॉर फुल रिवर्सल वी मे रिक्वायर इंजेक्शन विटामिन के 5 to 10 मिलीग्राम आईवी और 0.5 to 2 मिलीग्राम इफ द कंप्लीट रिवर्सल इज नॉट डिजायर्ड. थोड़ा सा रिवर्सल करना है, थोड़ा कम डोज दे दो. एडजस्ट द डोज अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स. इफ ब्लीडिंग इज वेरी सीवियर एंड द रिवर्सल इज इनएडिक्वेट, कंसिडर गिविंग प्रोथ्रोम्बिन. अभी दिस इज वेरी डेंजरस. Prothrombin is an actually activator of the coagulation cascade. It's complex concentrate, contains clotting factors. Now this is very, very dangerous. Patient can go into generalized thrombosis and patient can die in any time. So prothrombin complex concentrate containing clotting factors 30 to 50 units per kg दे सकते हैं हम लोग. It's an ICU management, लेकिन अपने को पता चाहिए. In most of the severe cases, consider cryoprecipitate, which is having a blood concentrate which has got all coagulation factors, or pooled platelets. The whole blood can also be. Of course, we may require to take the hematological guidance for this particular purpose. So this completes about the heparin or anticoagulation. It means we have. ठीक है, ये हम लोग next lecture में. Let me activate the question answer session. If you have any doubt, I'll be happy to answer. Otherwise, we will continue in the next class. Don't worry.